Welcome, my dear friends. This is your host, Tanveer Ahmed, and I welcome you on my YouTube channel, Dream English with me. Well, this poem, entitled as Prayer, is written by a great poet, Mehjoor. Our previous lecture was an introduction to this poem. So, if you haven't watched that video, please watch that now because it will serve as an introduction to Mehjoor's poetry, and it will give you a broad perspective of Mehjoor's poetry. Now, boys and girls, this poem is originally written in Kashmiri, and this has been rendered into English by a great professor of English, G.R. Malik Sahab. And जो ये पोम है इसमें महजूर दुआ करता है, इसमें महजूर क्रिएटर से कुछ दुआएं मांगता है, make certain requests, okay, and he has some dreams which he wants to come true, and he has certain wishes which he wants to get fulfilled. So he addresses God in a very emotionally heightened setup. Well, let's start then and see what does Mehjoor pray to God. Okay. In the first line, Mehjoor कहते हैं कि Lord, you are my hope and trust. That you are the only hope that I have, and I trust only you, my Lord. I put my trust in you. So please show me way of truth. Okay, and he also asks God to bestow him with the nectar of knowledge, because he does not want to dwell in ignorance. He does not want to dwell in ignorance. Boys and girls, dwell means to reside, to live somewhere. And here, ignorance has been compared with a dark house, a dark building. एक डार्क बिल्डिंग में, एक काले घर में, अंधेरे घर में क्या होता है? There might be insects, there might be poisonous insects which can harm us, and there can be venomous snakes, there can be scorpions, there can be cobwebs. तो एक डार्क जो हाउस होता है वो जुल्मत से भरा होता है, ठीक है? तो he compares ignorance with this dark house, and he compares knowledge with nectar. Nectar is a sweet juice which has a curing element. Okay, nectar वो जूस होता है जो honey bees suck करते हैं from flowers, ठीक है? And in mythology, अगर हम mythology में देखेंगे, nectar was a sacred juice जो gods पीते थे, gods with a small g. This is mythology, okay? This is mythology. So gods means deities. तो ये sacred and special drink हुआ करता था इनका. That means जो ये nectar है ये बहुत valuable drink है, बहुत बहुत ज़्यादा curing elements इसमें हैं. So he wants this nectar of knowledge. He wants to taste the nectar of knowledge. He wants to be enlightened. वो महजूर चाहते हैं कि उसका दिल रोशन हो जाए, इल्म के नूर से मुनव्वर हो जाए. वो इस जुल्मत में नहीं रहना चाहते. Because boys and girls, ignorance is a curse. Ignorance जो है ये curse है, and knowledge जो है it's a blessing. Remember it. Well, let's move on. So that means यहाँ पे Mehjoor uses a poetic device which is metaphor. वो हम next phase में इस lecture की discuss करेंगे poetic devices को. Now let's move on. In the succeeding lines, Mehjoor prays Almighty to cure him of ills and pains. Ills and pains are not just bodily ills and bodily suffering. It can be, some moral deformities also, some moral weaknesses also. Like हम में कुछ खामियां भी होती हैं. खामी होती है like गिबत करने की, ठीक है, backbiting की. Like we have malice sometimes. Malice होता है, हसद होता है, कीना होता है, ठीक है. तो वो भी खामियां होती, वो भी ills and pains होती है. So Mehjoor wants to get cure from it. And this ignorance is also this is also ills and pains. It also falls in the gamut of ills and pains. तो ignorance भी इसी में आएगा. So he wants to be cured from these ills and pains, and he wants his Lord to be kind to each
to be kind to him each moment. He wants God to be merciful and to shower his blessings on him every time, all the time, always. Okay, he wants God to keep him under his protection, under his umbrage, umbrage, to keep him under his protection, okay, all the time. And he wants his God, let me never feel in want. He wants his God that he doesn't want to feel in want. That means he doesn't want to be dependent on others. Never feel in want means कि वो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है दुनिया के लोगों पे. ओके, ही वांट्स टू बी सेल्फ सफिशिएंट. Mehjoor wants to be self sufficient. He wants to be self reliant. He doesn't want to be at the doors of the people. He doesn't want to beg for his living. Okay, he wants to be self sufficient, self reliant. ठीक है, खुददार बनना चाहता है वो. And in the next lines, he says he wishes God to save him from sloth, infirmity, and doubt. Sloth means, boys and girls, laziness and unwillingness to work. Kahili. Infirmity means weakness and doubt. Okay. तो doubt भी एक बहुत खतरनाक एक weakness है. Doubt भी एक बहुत खतरनाक curse है. Like ये doubt भी इसी में आएगा. Infirmity, sloth, doubt, all will fall in the gamut of these ones. Ills and pains, ignorance, weakness, infirmity, ये सारे ills and pains है. So he wants to be cured from it. He wants to be protected from these things, from these evils. Okay, so doubt. हाँ, doubt के बारे में हम याद रखें. Let me quote a famous saying. किसी ने कहा कि your doubts can raise mountains. Your doubts can raise mountains and your belief can move them. Belief से आप you can move mountains, but your doubt can create them. That means अगर आपको कुछ काम करना है, you have some motive in your life, you have some ambition, आपको कुछ करना है, आपका माइंड जो है ना वो क्लियर होना चाहिए. You should have clarity of thoughts. You should be determined and perseverant. अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट आ गया, you cannot achieve that goal. You will not achieve that goal. You will fail utterly. Okay. Now, in the next line, Mehjoor says he requests God to surcharge my heart with passion, zest, and hope. Okay, he wants to be saved from these things, and he wants God to fill his heart, to impregnate his heart with passion. Passion means fervor, determination. Zest means enthusiasm, and hope, उम्मीद. तो ये इन चीज़ों से अपने दिल को भरना चाहता है. Because these things are the wealth of a human heart. हमारे दिल की जो दौलत होती है वो यही चीज़ें होती है, और हमारे दिल को, हमारे मन को जो खराब करती हैं वही चीज़ें होती हैं, ills and pains. Okay. Now in the next lines, Mehjoor says, let me not ever chant the sleep-inducing tales. Sleep-inducing tales. Mehjoor, यहाँ पे tales means stories, means poetry of Mehjoor. It symbolizes, it indicates, or it implies the poetry of Mehjoor. Mehjoor doesn't want to write such poetry which will create an intoxicating effect on masses, which will have a tranquilizing effect on common people. He wants to write poetry which has such an effect, which infuses life into dead. जिससे मुर्दा दिलों में जान पैदा हो जाए. वो ऐसी पोइट्री लिखना चाहता है, वो ऐसी कहानियाँ लिखना चाहता है कि जिससे मुर्दों में भी जान पैदा हो जाए. Okay, he wants to urge his people to stand on their own feet and to take action against the oppression, okay, and the oppressor. So in the next lines, he says, let me sing the songs which infuse life into the dead. Let me sing of that which inspires people with love. Acha, he wants to write such poetry. He wants to, write such tales which will inspire people with love. That means which will, vanish away the hatred, and which will
गिव वे टू लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पीपल, जिससे यूनिटी पैदा हो जाए, जिससे लोग में प्यार मोहब्बत पैदा हो जाए। एंड कॉजेज ऑल बिटरनेस एंड हेट्रेड टू वैनिश। और मैं ऐसी पोइट्री, मैं ऐसी शायरी करना चाहता हूँ, मैं ऐसा सुखन बोलना चाहता हूँ जिससे लोगों में बिटरनेस, कड़वाहट एंड हेट्रेड दूर हो जाए, वैनिश हो जाए। ओके, सो ही वॉन्ट्स टू बी अ सिंबल of love, he wants to be a sign of love, he wants to be a messenger of love and peace and harmony। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक कोट किया था, मेजूर सेज हुंच शक्कर दुच मुसलमान साहब साहब दुत बेशक्कर लयु पानवइन न्याय थयु माय थयु पानवइन बस मोहब्बत बगरई पानवइन। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन में मेजूर कहता है, यू ब्रॉट मी टू बिलोंग विद द अर्लीस्ट वर्नल ब्रीज, लेट नॉट द बर्निंग हीट ऑफ समर विद मी ग्रे, like dew, how long shall I wait for the first flash of the sun? Awaken me with the flowers in the first flash of the dawn, in the first stroke of the dawn, sorry। तो यहाँ पे मैंने ये ओरिजिनल वर्स कोट की है इस पोम की, बिकॉज यहाँ पे जो ये ट्रांसलेशन में 4 लाइन्स मैंने कोट की फ्रॉम यू ब्रॉट मी टू ब्लूम टू फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ डाउन से, मुझे लगता है ये सुपरफ्लुअस है, ठीक है, क्योंकि ये सेंस ही नहीं देता है ट्रांसलेशन। यहाँ पे ओरिजिनल कुछ और है, ट्रांसलेशन में कुछ और है। ओरिजिनल क्या है, शबनम की पहट आपताब स्कूत काल कर इंतजार गुड नीचे अनवारी पोशन सचली वुजनाउतम। वुजनाउन मीन्स इन कश्मीरी वुजनाउन मीन्स टू अवेकन समवन, ठीक है, फ्रॉम स्लीप। एंड शबनम मीन्स ड्यू, आपताब की पहट मीन्स लाइक सन, कूत काल कर इंतजार मीन्स हाउ लॉन्ग शैल आई वेट। ओके, गुड नीचे अनवार मीन्स dawn time, ठीक है, at the time of dawn। पोशन सत मीन्स विद फ्लावर्स। ओके, ये मैंने लूजली ट्रांसलेट किया इसको। तो मेजूर कहना चाहता है कि शबनम की पहट आपताब स्कूत काल कर इंतजार, लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ सन। मैं ड्यू की तरह, जिस तरह ड्यू में ड्यू का एक फीचर ये है कि ड्यू वेट करता है सुबह की रेज की, जब सुबह की सन रेज ड्यू पे पड़ती हैं, ड्यू जो है ये एटमॉस्फेयर में वैनिश हो जाता है, एंड इन द इवनिंग ये फिर से फॉल डाउन होता है। सो ड्यू waits for the first flash of the sun, but he, Mehjoor, doesn't want to wait for the first flash of the sun because it is it is too much for Mehjoor, ठीक है, it's too long for Mehjoor। Mehjoor इतना वेट नहीं कर सकता है। God नीचे अनवारी पोशन सच लेवुज नाउतम, he wants to get awakened, he wants to arise in the morning with the flowers। flowers सुबह जल्दी खिल जाते हैं, ठीक है। वर्नल ब्रीज जो है, जो बाद सुबह स्प्रिंग की हवा, वर्नल ब्रीज, ये फ्लावर्स को, फूलों को जल्दी जगाती है। अगर आपने गौर किया होगा इन द इवनिंग अक्सर जो फ्लावर्स होते हैं वो बिल्कुल कंट्रैक्ट करते हैं अपने पेटल्स को, एंड इन द मॉर्निंग वो फिर से अपने जो है पेटल्स जो है उनको खोल देते हैं, ठीक है। तो यही कहता है मेजूर की, लाइक ही कंपेयर्स हिमसेल्फ विद अ फ्लावर, ठीक है, एंड ही वांट्स टू वेक अप फ्रॉम द स्लीप with these flowers, okay, and he doesn't want like dew for the first flash of the sun, okay, because it's too much for him। in the other sense हम बोल सकते हैं he compares himself with the vernal breeze। ये भी हम ले सकते हैं, मल्टीपल मीनिंग इसकी। दिस इज द क्वालिटी ऑफ पोइट्री। पोइट्री में एक एम्बिग्यूटी होती है, ठीक है, इसमें मल्टीपल मीनिंग्स का जो है वो एक चांस होता है। सो ही कंपेयर्स हिमसेल्फ विद द वर्नल ब्रीज। ये भी बोल सकते हैं कि वो बादे सबा से, वर्नल ब्रीज से अपने आप को कंपेयर करता है। वर्नल मीन्स समथिंग विच इज रिलेटेड टू स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो हवा चलती है, जो फ्रेश होती है, वो अपने आप को उसी से कंपेयर करता है। एंड लेट नॉट द बर्निंग हीट ऑफ समर विदर मी ग्रे, कहता है कि मैं फ्लावर हूँ और मैं बहुत फ्रेश हूँ इस वर्नल ब्रीज की तरह। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो समर की हीट है ये मुझे विदर करे, विदर मी ग्रे, इससे मैं मुरझा जाऊँ। मेरा जो पिंकिश कलर है, मेरा जो फ्रेश कलर है, जो मेरी ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाए, वो ग्रे पड़ जाए। ओके, सो समर, हीट ऑफ समर में यहाँ पे मेटाफर हो सकता है बॉयज एंड गर्ल्स। हीट ऑफ समर कैन बी अ मेटाफर हेयर। हीट ऑफ समर यहाँ पे
इसकी बहुत सारी मीनिंग्स हो सकती हैं. हीट ऑफ द समर मीन्स टफ टाइम्स. टफ टाइम्स बिकॉज जो मैजूर का दौर था जब वो जिंदा थे तो उस वक्त डोगरा रूल था, सो पीपल वुड फेस हार्डशिप्स एट द टाइम. तो ये हो सकता है हीट ऑफ द समर, ट्रबल्स जो उस वक्त की थी. नाउ नेक्स्ट लाइन में कहता है इनफॉर्म आई एम अ मैन इन सबस्टेंस फॉर फ्रॉम ह्यूमैनिटी. मैजूर सेज इनफॉर्म आई एम अ मैन but in substance I am far from humanity. That means substance means my real essence. जो humans की real essence है वो हमारा substance है. Our real essence is our humanity, our human values. We have all we are all devoid of these values. Mehjoor too feels to be to be devoid of these values, to be devoid of all these values. And so ये बहुत Mehjoor क्रिएटर से रिक्वेस्ट करता है नॉट टू पुट हिम इन ट्रेल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस एंड नॉट टू टेस्ट हिज करेक्टर बिकॉज ही इज बाउंड टू फेल, बिकॉज ही इज फार फ्रॉम ह्यूमैनिटी, ही लैक्स दिस ह्यूमन वैल्यूज. ठीक है, सो subject me not to trials, shame not my human form, because if God tests his character he is bound to fail, and this way his human form will be shamed. Okay, his human form will be shamed. So now in the end Mehjoor says forsaken by men am I, so they call me Mehjoor. Mehjoor का मतलब ही होता है वो बंदा जिसको लोगों ने छोड़ दिया हो, किनारा कश हो चुके हो जैसे लोग. Forsaken means abandoned, deserted, jilted, betrayed. ठीक है, left alone. Mehjoor कहता है कि ए अल्लाह, ए मेरे क्रिएटर, ए मेरे पैदा करने वाले, लोगों ने मुझे तर्क कर दिया, इसीलिए मुझे कहते हैं कि तू Mehjoor है, तुझे सबने छोड़ा है. People may desert me, they may abandon me, they may leave me alone thus, but you don't abandon me, Lord. I don't have any issues with these people. If they desert me, okay, if they move away from me, I can bear their separation, but I cannot bear your separation. Okay, लोग मेरे साथ क्या करें मुझे उसका कुछ नहीं है. I don't give a damn. In other words, but if you separate from me for just a moment, I'll perish. I cannot bear it. मैं उस वक्त बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा. So be with me, be kind to me, be close to me all the time, each moment. Okay, this was a little effort from me to explain these lines. Now let's talk on some of the poetic devices of this poem quickly, because we are running short of time. Video is getting too much long, so I'll talk about first of all metaphors. Metaphor में हम comparison करते हैं, which is indirect, which is implicit. Metaphor में हम implicit comparison करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे first of all he compares ignorance with a dark house in the second line, and he compares knowledge with nectar. Okay, knowledge इतना tasty, इतना enlivening है, vigorating है, इतना curing है जैसे कि nectar होता है, इतना enlightening है, इतना power है knowledge का. And he also uses anaphora, boys and girls, anaphora. Anaphora means a repetition, REPI is repetition of some words, of some words in the beginning of some lines. Like here in the second stanza he starts with the word let me, and in the next line he starts again with the word let me, and in the third line he starts once again with let me. जो ये let me इसने thrice यूज किया है, इसी को बोलते हैं anaphora. ये repetition हुआ in the beginning of the lines. ठीक है, so it's anaphora. It's also a poetic device. नेक्स्ट जो इसने यूज़ की है पोइटिक डिवाइस वो है सिमिली. इसने यूज़ की है यू ब्रॉट मी टू ब्लूम. खिलता कौन है? गुलाब खिलता है. सो ही कंपेयर्स हिमसेल्फ विद द फ्लावर. यहाँ पे सिमिली यूज़ की है Mehjoor ने. एंड देन लाइक ड्यू ही कंपेयर्स हिमसेल्फ विद ड्यू. ये भी सिमिली है. ओके, एंड देन he has made use of
alliteration, boys and girls. Alliteration means a repetition of consonant sounds in the beginning of some words. तो यहाँ पे repetition कहाँ है, alliteration कहाँ है? Check the lines like, how long shall I wait for the first flash of the sun? For first flash of the sun. Here consonants कौन है जिनको रिपीट किया गया है? F. या अगर इनके साउंड्स देखेंगे फ. इन consonant sounds को रिपीट किया गया है in the beginning of the words. Lines में नहीं, in the beginning of the words. तो इसी को बोलते हैं alliteration. Okay, well, next line में भी ये alliteration है. Awaken me with the flowers in the first stroke of the dawn. So next में एक और poetic device में, boys and girls, I would like to talk about it, which is called poetic license. लास्ट वाले ये जो है वर्ड्स को आप देखिए. Forsaken by men am I. Forsaken by men am I. यहाँ पे Mehjoor has violated the grammatical structure, the linguistic structure. Syntax को यहाँ पे violate किया गया है, क्योंकि इसको क्या लिखना था? I am forsaken by men. I am forsaken by men. This is the usual pattern, usual structure जो हम यूज करते हैं. पहले सब्जेक्ट, उसके बाद दूसरी चीजें. लेकिन यहाँ पे इसने वायलेट किया है स्ट्रक्चर को, सिंटैक्स को. दिस इज कॉल्ड पोइटिक लाइसेंस. पोइटिक लाइसेंस मीन्स पोइट्स को एक अथॉरिटी होती है लैंग्वेज को वायलेट करने की कभी कभी. ठीक है, अथॉरिटी होती है, लाइसेंस होती है इनके पास. इसको बोलते हैं पोइटिक लाइसेंस. ठीक है, द अथॉरिटी ऑफ पोइट इज टू चेंज the grammatical structure or syntax of a language. ठीक है, इसको बोलते हैं poetic license. तो these were some poetic devices, boys and girls, जो हमने इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें जो है metaphors हैं, but we will stick to these ones also. I hope this lesson was fruitful for you. Okay, well, if this lesson was fruitful for you, if you learned something new, please give me a thumbs up and subscribe to my channel Dream English with Tanveer, and don't forget to share it